दर्शन के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा और लोगों का भक्तों का संख्या बढ़ रही डे टू डे। तो एक क्यू लाइन के लिए क्यू लाइन में घंटा घंटा वो खड़े रखना, इस दर्शन थोड़ा आसान होने के लिए क्या प्लानिंग है आपका? Yeah. See, hours and hours together, people have to stand in the queue, and to avoid that, we have planned for electronic crowd management system that is called a time darshan. So, moment Sai devotee enters Shirdi, there will be 100 booths at the entry points, and they will be registered. Their photograph will be taken, their biometric will be done, their name, village, mobile number will be recorded, and one QR code will be generated that will be pasted on their darshan pass. Time will be given to them for a darshan. Let us say 3:30 p.m. Afternoon is the time for darshan. They can do their work all over the morning and afternoon till 3:30. They have to reach temple at 3:30. Go to the temple, get entry, and get easy darshan. They don't have to stand in the queue for hours together. So that is a simple time darshan system. ये फ्री पास है. जो VIP दर्शन पास है दैट इज़ कंटिन्यूइंग. उसको भी पहले रिकमेंडेशन लगता था, इधर MP, MLA, मिनिस्टर, somebody has to recommend for that VIP pass. Now we have done away with that recommendation. Any bhakta can come forward and ask for a VIP pass by paying 200 rupees, and he gets that pass without any recommendation. Even we have made it online. Online anybody can book that darshan pass, VIP darshan pass, go to the temple and take darshan. So all these systems are available. छोटे बच्चों को लेके आते हैं, वो महिला के लिए। See, what we observed is there are many mothers carrying infant child with them, and they have to feed the child in between. We observed that they start feeding in the line itself. It is a very uncomfortable situation. So we have created baby feeding rooms and allowed these mothers carrying infant child a direct darshan. They don't have to stand in queue. They will be provided direct darshan of the Baba. Aged persons, senior citizens more than 60 years with an attendant, they are provided direct darshan. Differently abled citizens and जो रुग्ण है, बीमार है, नॉट वेल, ऐसे लोगों को भी डायरेक्ट दर्शन की व्यवस्था की है. और क्यू को भी इम्प्रूव कर रहे हैं. वी आर मेकिंग दैट क्यू halls fully air conditioned, fully lighted and well ventilated, with toilet arrangement, with free tea, coffee, milk and biscuits, and with a medical aid assistance in the queue for people to be helped of for. एंड इन दिस सेंटिनरी ईयर, इस सेलिब्रेशंस में आप भक्तों को नहीं तो मंदिर वालों को, सारी दुनिया में डिवोटीज़ को आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? संस्थान को किसी तरफ से वो लोगों भी हाथ मिलाना सर्विसेज के वो तरफ से, नहीं तो आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? जरूर जरूर. आज जो सम्मेलन हुआ, ये ग्लोबल साई टेम्पल समिट का सम्मेलन हुआ. दुनिया भर से साई टेम्पल के जो ट्रस्टीज़ है वो इस सम्मेलन में आए थे. and it was a day long deliberation. Many people, they spoke about their expectations about the temple, what they can do, what temple should do and all. Now what we suggest is next year is the Baba's Samadhi centenary year. It should be celebrated all over the world in a grand way. There should be celebrations at various places. At the same time, there will be celebration in Shirdi also. And there will be floats moving from various places, north, east, west, south and abroad also, and coming together from those places to Shirdi, while taking stops and halts in between on the way. So that way it will be a grand celebration. Then Sai Srishti will be created in Shirdi. It will have pictures and models of those days, huts of those days, scenes of those days,
It will be a light and sound show type of system. The famous art director, Bollywood art director Nitin Desai is creating that Sai Srishti. It will have 100 feet tall Sai Baba statue and all the pavilions, 34 pavilions, wherein in the picture form, model form, Sai Charitra will be depicted and displayed for the benefit of Bhakta. There will be Sai Planetarium, there will be Sai Laser Show, there will be Sai Stargazing Gallery, there will be Sai Wax Museum consisting of statues of all the saints. Saints, those have been there in India from all the states. That will be a museum devoted for the saints, Wax Museum. ये सब शिरडी में प्लान होगा। ऐसे कई सारे एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं जिसमें भक्त केवल शिरडी में आया दर्शन किया इतना ना हो करके ही कैन मूव अराउंड, ही कैन स्टे इन शिरडी, ही कैन एंजॉय, इट विल बी ए पिलग्रिमेज एट द सेम टाइम इट विल बी ए रिलीजियस टूरिज्म enjoyable for the family. Yeah. शिरडी में पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है ना? पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है। पानी के लिए तालाब बनाए हुए हैं और डैम से पाइपलाइन का प्रस्ताव भी पारित किया गया है, वो अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। ग्रीन शिरडी का भी प्लान इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऑल द रोड डिवाइडर्स एंड सर्कल्स विल बी डेवलप्ड विद द प्लांटेशंस and all around Shirdi plantation will be done. There is a green Shirdi movement, and we are planning for a solid waste management plant in Shirdi which will take care of the solid waste generated in the Shirdi temple and city, so that the Shirdi can be clean, green and अच्छे से स्वच्छ रहेगा, एक प्रसन्न शहर रहेगा, स्मार्ट सिटी बनेगा। डेली बाबा को बहुत सारा गुलाब और रोजेस आता है, गार्लैंड भी आता है, और वो सब हम देखते ही रहते हैं। क्या होता है, बहुत बहुत आते हैं ना? हाँ, रोज़ 1 टन फूल आते हैं, 1000 kgs। तो विचार चल रहा था इसका क्या करें। सम पीपल सजेस्टेड कि इसका गुलाब अत्तर कर सकते हैं, गुलकंद बना सकते हैं या मैन्योर कर सकते हैं। तो हमने सारे प्रयोग सोचे। बाद में सोचा कि भक्त जो डोनेशंस देते हैं उनका यदि गारलैंड्स दे करके सत्कार किया जाए, सम्मान किया जाए तो कैसे रहेगा। और जो भक्त दर्शन के लिए आते हैं उनको फूल यदि प्रसाद के रूप में दिया जाए तो कैसे रहेगा। तो लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट एंड वी एक्सपेरिमेंटेड ऑन दैट and it was found so pleasing that the problem has been converted into satisfaction. It has generated huge satisfaction among the devotees. People started demanding flower from the samadhi which is offered to the samadhi. People started demanding garlands which is offered to the samadhi, and when people are garlanded with the garland when they donate to the temple, they become so overwhelmed and they become so happy that you cannot describe it in words. So all the flowers are taken away by the devotees. तो समस्या जो थी उसको समाधान में बदल गई। या So there are more than 50 villages who are farming for these flowers. So there are more than 100 flowerers who are making the garlands, collecting the flowers and selling the flowers. So it is a job generating situation. Everybody should work hand in hand. I believe there should be standardization. There should be no cases of cheating or misbehavior or anything with the devotees. So there has to be some system. Maybe in the days to come we'll plan for that. संस्थान में पूरा कितना टीम है, स्टाफ वो मिलके? क्योंकि हर जगह स्टाफ हम देखते ही रहते हैं। पूरे 6000 स्टाफ मंदिर में है। अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते रहते हैं, राउंड द क्लॉक काम करते रहते हैं। सिक्योरिटी में भी है, दर्शन में है, देन भोजनालय में है, एजुकेशन में है। 40 डिपार्टमेंट है
जो काम करते रहते हैं। पानी डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, वर्कर्स डिपार्टमेंट है, ऐसे कई सारे हैं। टेलीकास्टिंग डिपार्टमेंट है, साउंड डिपार्टमेंट है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है। ऐसे 40 डिपार्टमेंट है और 6000 से अधिक लोग हैं सेवा में लगे हुए हैं। हाँ, वो बहुत सारे लोग आ रहे हैं और इतना स्टाफ भी है और भक्तों और आने वाला है और सेंटिनरी ईयर के लिए और तो बड़ा होता है रश। सिक्योरिटी के उस तरफ में टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करने वाला है? See, some bad incidences also are recorded. Theft incidences or like that. पॉकेट मारी होती है, चोरी मारी होती है। तो ये पता चला है, लेकिन इसका कैसे समाधान निकाला जाए, तो इसका पुलिस के माध्यम से भी समाधान निकालने की कोशिश है, सिक्योरिटी के माध्यम से भी है। एंड सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अगर यूज़ करें, लाइक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर एक होता है कि जो अगर कंप्यूटर में डाल दिया जाए एंड सीसीटीवी सिस्टम में डाल दिया जाए, तो इट रिकॉग्नाइजेस द फेसेस विच आर ऑलरेडी फेड इनटू द कंप्यूटर। And police already have the photographs of all the pickpocketers, and that electronic control system can be used for that. So we are trying various means and ways. Yeah. एक्चुअली शिरडी बोले तो लोग इसलिए आते हैं खाली बाबा के दर्शन के लिए। हाँ, शिरडी में कुछ ऐसा गार्बेज अच्छा नहीं है तो गंदा है, ऐसा है तो भी वो इम्पैक्ट शिरडी में ऐसा है बोल के लोग ऐसा समझते हैं। तो ये पूरा इसीलिए आप क्या करें? पूरा शिरडी क्लीन ग्रीन करने का विचार हमने किया है। शिरडी का कचरा जो जमा होता है वो अभी डालने के लिए जगह नहीं है, तो उसको डिस्पोज कैसे करेंगे? तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान डाल के ही उसको डिस्पोज करेंगे। तो वी हैव नैरोड डाउन ऑन ए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट विच विल बी वेरी सून इंस्टॉल्ड इन शिरडी। 20 टन्स पर डे कैपेसिटी का प्लांट डाला जाएगा, जिसमें पूरा कचरा जो है उसका डिस्पोजल हो जाएगा। एंड आउट ऑफ दैट प्लांट इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड, मैन्योर विल बी जनरेटेड, plastic and metals will be separated, and everything will be sold off. There will be nothing left over. All things will be consumed, and it will be a profit making business. So I always believed that garbage should become asset, not a liability. One day should come when corporates should approach corporations that आपका garbage हमको दीजिए, will pay for the garbage, and they will purchase the garbage. That day is not far off. हमको मालूम है 15-20 साल पहले पानी की बोतल कोई ख़रीदता नहीं था, लेकिन आज पानी की बोतल 10-15 रुपए में ख़रीदते हैं। तो द डे इज़ नॉट फार ऑफ व्हेन कचरा भी ख़रीदने लगेंगे। बट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हम डाल ही रहे, विच इज़ इकोनॉमिकली वायबल प्लांट। अभी तो ग्लोबल समिट बोल के दुनिया भर से पूरा डिवोटीज़ को इनवाइट किया, मीटिंग तो हो गया। इसका कंटिन्यूटी फ्यूचर में और कम्युनिकेशन क्या होगा, और दुनिया भर में पूरा बहुत सारे मंदिर है, डिवोटीज़ है, हमारे तरफ से क्या आप चाह रहे? ये पहली बार ग्लोबल समिट का ऑर्गेनाइजेशन किया था। अभी तक पूरे जो साई संस्थान साई टेम्पल्स है उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। वी डिडंट हैव द डेटा अबाउट साई टेम्पल्स। Now we have started collecting the data about the Sai temples. We will start registration of Sai temples. There are Sai mandals which do not have the temple, but they are the groups of people who are Sai devotees. We will start registering such Sai mandals. Then there are people who come by procession. They call it palki, a float which they carry on their shoulders, and they walk from their own place till Shirdi over a number of days. So these Palki mandals, Palki Yatra also will be registered. So we have started registration of the things, so that there will be a creation of database. Then we'll start communicating with the Sai Trust, Sai Temples, and through communication we'll form working group, small groups,
maybe we have to evolve that through discussions, statewide committees, nationwide committees, international committees, and through these committees then celebration will take place. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో చూశారు కదా, ఇది మనకి షిరిడి సంస్థానం నుంచి బాబా 100 ఏళ్ల సమాధి ఉత్సవానికి చేస్తున్న ఏర్పాట్లకు సంబంధించి షిరిడి సంస్థాన్ చైర్మన్ గారు ఇచ్చిన అధికారిక ఇంటర్వ్యూ. ఓం సాయిరామ్.